Hey learners, welcome to the India's largest education platform, that is Unacademy. This is your plus educator, Kuldeep Dubey. You can visit out the profile of mine over Unacademy. And be very clear when you are visiting out the profile, do check the spatial sessions because spatial sessions are free to access. They are free to access. That means anybody can access these spatial sessions just by having the Unacademy application in his or her phone. When you will be visiting out the spatial session, then only you can generate a perception whether you should connect with me or not. I'm conducting the MCQ on the spatial sessions, and when you do connect on the MCQ, you can evaluate your potential, and at the same time, you can evaluate the extent of the content of the educator. Evaluate extent of content. And believe me, when you are preparing for the civil services, both the evaluations become essential. And when you will be evaluating mine extent of the content, then definitely you will be having idea whether you should connect with me or not. I'm delivering the sessions on the Unacademy Plus. Nowadays I'm conducting the sessions for Indian history by Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, and you can start connecting with me by Sarpa 8 p.m. This is my referral code KD496, which you guys can ask your near ones, dear ones, loved ones to use. In this video, we will be having discussion over the right to equality. But before heading to the right to equality, I just want to let you know something about the rights. When it comes to the rights, the first and the foremost point which every single student should be thoroughly clear, these are individual claims. These are individual claims for his or her upliftment. For his or her upliftment. Upliftment can be social, upliftment can be moral, upliftment can be economical. And when it comes to the rights classification, the rights can be classified into two parts. Rights can be classified into two parts. The very first, human right, and the second, fundamental right. When you want to look after the literal meaning of the human rights, that means the rights which are recognized by society. So, rights which are recognized by society are are referred as human rights, and the rights which are recognized by any law of the country, by any law of country, such rights are referred as the fundamental rights. So India is also having some fundamental rights which are enshrined in the part number 3 of the Indian Constitution. In the part number 3 of the Indian Constitution, under article number 12 to the 35. In this video, we will be having discussion over one of such right only. That means we will be looking into the right to equality, which is mentioned under Article 14, which is mentioned under Article 15, 16, as well as 17, as well as 18. This is quite responsible for bringing out the social status or the social justice into the country. Let's have discussion over the right to equality. Let's have discussion over Article 14. When it comes to the Article 14, every single individual, those who are connecting here, should have a very clear cut perception. It states about equality before law. It is mentioning about equality before law, as well as equal protection of law, equality before law, and equal protection of law, equal protection of law. Be very clear. Article 14 represents the idea of equality irrespective of the race, irrespective of the color, irrespective of the nationality, just by providing the equality before law, just by providing equal protection of the law. When it comes to the equality before law, that means no person shall be denied treatment of equality before the law or equal protection of law within the territory of India. This is the point which we need to understand.
This particular right is extended to citizens as well as the foreigners. This might be the possible question in the upcoming BPSC prelims or several other state examination. So I would request every single student to be thoroughly clear in context of all the facts which I had asked you in context of right to equality or equality before law as well as equal protection of law, which is started under Article 40. Coming to the next one, although there are certain exceptions as well, but for knowing the exceptions, you just need to subscribe to Unacademy using my referral code KD496. Let's have discussion over the article number 15. This is a very important article which brings out the social equality, which is quite responsible for enhancing the social status of depressed classes for SC, ST, as well as those persons who are economically and socially and educationally backward. Because this article under 15 mentioning about the prohibition of discrimination on the grounds of religion, on the ground of race, caste, sex, or place, or the any of them. So basically, you just need to understand nobody will be discriminated on the basis of religion in the country. Nobody will be discriminated in the country on the basis of race. Nobody will be discriminated in the country on the basis of caste, on the basis of sex, or place of birth, or place of birth, or any of them. This is the point which we need to understand. To prevent such a kind of discrimination, the state will be legislating certain laws. This is the point which we need to understand. But at the same time, I would request every single student to be thoroughly clear in context of this word, that is discrimination. So what we do understand from the discrimination, you should be thoroughly clear with this, that this is not defined. This is not defined in Indian Constitution. It is something like which is imposing certain restrictions, which is imposing certain disability, liability, or imposing certain conditions. So when you do face such kind of disability, liability, restrictions, conditions, just on the ground of religion, race, caste, sex, or place of birth, such acts are referred as the discrimination which are prevented into the country from the Article 15. But at the same time, I would request every single individual, none of the fundamental rights which are started into Indian Constitution are absolute in the nature, except the Article 17. दैट मीन्स अगर आप इसे देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कहा गया है कि भाई आपकी रिलीजन के आधार पर, आपकी रेस के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरे कई सारे ग्राउंड हैं जिनके आधार पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है। तो नहीं होगा किन के आधार पर? बोले 5 ग्राउंड्स हैं। किस आर्टिकल में? 15 में। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। देखो भाई ये महिला है, आर्टिकल 15 ने इतना एम्पावर किया है कि ये जो महिला है, ये महिला क्या कर सकती है? सर, ये जो पब्लिक आपका हैंड पंप है, इस पब्लिक हैंड पंप से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या कर सकती है? बोले सर पानी भर सकती है। दिस इज द पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये महिलाओं के लिए, ये आपके एससी एसटी के लिए, ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ये जेंडर ओरिएंटेड क्या कर रहा है? बोले सर इन सारे आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रहा है आर्टिकल 15 और इस तरीके की खूबसूरत कंडीशंस जो है उनको जनरेट कर देता है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव डिस्कशन ओवर आर्टिकल 16। आप समानता की बात करते हैं, आपको समानता का अवसर दिया जा रहा है। किसमें समानता का अवसर दिया जा रहा है? बोले सर समानता का अवसर दिया जा रहा है रोजगार में, नौकरियों में। कौन से? बोले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये पॉइंट हमें समझना है। और समानता का अवसर किस आर्टिकल के माध्यम से दिया जाता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए आर्टिकल 16 के माध्यम से दिया जाता है। और इसी समानता के अवसर में महिलाओं की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, एससी एसटी के मेंबर्स की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस की कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए सर निश्चित तौर पर कुछ सेफगार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। जो सेफगार्ड्स क्या करते हैं? बोले सर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। मैंने पिछली बार अभी प्रीवियस आर्टिकल में भी कहा था कि आर्टिकल 17 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आर्टिकल हमारा, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एकमात्र आर्टिकल जो एब्सोल्यूट है नेचर में, एब्सोल्यूट होना क्या है? बोले सर एब्सोल्यूट होने का मतलब है उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ऐसा एकमात्र आर्टिकल 17। तो यह जो समानता का अवसर है आर्टिकल 16 के माध्यम से, इसमें भी हमें क्या नजर आते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नजर आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 3 से नजर आते हैं, आर्टिकल 16 के क्लॉज नंबर 4 से नजर आ सकते हैं, आर्टिकल नंबर 16 के 4A से नजर आ सकते हैं, 4B से नजर आ सकते हैं, 5 में देख सकते हैं, 6 में देख सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो बेहद एब्सोल्यूट इन द नेचर है।
एब्सोल्यूट है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि यह क्या है? बोले एब्सोल्यूट है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? बोले सर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत की भावना जो है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक आर्टिकल जो रिस्पांसिबल है वो कौन-सा आर्टिकल? वो 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability, which means, sir, untouchability is an act which is not defined in Indian Constitution. Which is not defined in Indian Constitution. This is the point which we need to understand. Certain disabilities which are imposing just on the basis of your so-called this, there is color, on the basis of so-called your caste, creed. Such acts are referred as an act of arising out of the untouchability. But all such acts are prevented and state had legislated in the year of 1955 Untouchability Offence Act, which in the year of 1976 amended and known as Protection of the Civil Right Act 1955. आपको जानकर अच्छा लगेगा अगर किसी व्यक्ति को आपके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के माध्यम से सजा होती है तो सर वह व्यक्ति जो है वह आपके भारत में किसी भी इलेक्शन में क्या नहीं कर सकता? कंटेस्ट नहीं कर सकता। भारत में किसी भी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता। किसी भी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको स्पष्ट होगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँगा और अगले आर्टिकल की ओर बढ़ूँगा। आर्टिकल नंबर 18 व्हिच इज़ लास्ट इन दिस, जो लास्ट है इसमें किसमें? बोले सर राइट टू इक्वालिटी में। जो अब